प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ऊंचाइयां छू रहा है। फडणवीस ने कहा कि मेक इन इंडिया से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत आज दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को भी मोदी सरकार के नेतृत्व में भरपूर विकास का लाभ मिला है। देशाचे सर्वाधिक काळ कार्य करणारे निर्वाचित पंतप्रधान म्हणून 4399 दिवस पूर्ण करत एक नवीन कीर्तिमान स्थापित केला आहे। हे 4399 दिवस केवळ हा काळ नाहीये, तर हा भारताच्या प्रगतीचा आलेख ज्या काळामध्ये लिहिला गेला असा सुवर्ण काळ आहे। ज्या काळामध्ये देशातले 25 कोटी लोक गरिबीतनं बाहेर आले तो हा काळ आहे। ज्या काळामध्ये देशामध्ये रस्ते, रेल्वे, पोर्ट, एअरपोर्ट सर्व प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं जाळं तयार झालं तो हा काळ आहे। ज्या काळामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने एक मोठी भरारी घेत जगातील 4थ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून जगाच्या पाठीवर नाव कमावलं तो हा सुवर्ण काळ आहे।